Assalamu alaikum. Hope so you all are doing fine. So the topic we are going to discuss today is about like the West Saxon Prose period. So West Saxon Prose period. Here we will talk about literary significance of Anglo Saxon Prose period. So let's start our today topic. So before like we can start this topic, the first thing we have to know what is prose actually. So the definition of prose is be like it refers to any writing that follows the conventions of speech and language. So like prose can be anything: textbook, lectures, novels, short stories, fairy tales, newspaper articles, and essay. Like the any written form of textbook, lecture, because all of these are like written in written form. So this is called prose actually. So let's talk about the West Saxon prose period. So I'm going to talk about like Anglo-Saxon Chronicle. A historical record begins about the time of King Alfred reign 871 to 899 and continuing for more than 3 centuries. ये किंग एल्फ्रेड के दौर में ये वाला प्रोज का पीरियड स्टार्ट हुआ था और ये 3 सेंचुरीज तक ये कंटिन्यू रहा था. अब बात करेंगे लाइक द पीरियड वाज आल्सो मार्क्ड बाय द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश प्रोज. अब उसकी बादशाहत में ये वाला प्रोज का पीरियड स्टार्ट हुआ था, तो हम उसके जो दौर था उसको हम बिगनिंग ऑफ इंग्लिश प्रोज बोलेंगे. और देयर वाज नो ब्रेक इन एंग्लो सैक्सन प्रोज पीरियड एक्चुअली. अब उसने जब एक दफ़ा उसको शुरू कर लिया था तो उसमें कोई ब्रेक नहीं था. जो था इसमें ग्रेट सक्सेस ऑफ एंग्लो सैक्सन प्रोज इज इन रिलीजियस इवेंट्स. King Alfred translated Latin to English, through which a prose was established. The famous Anglo-Saxon king, Alfred the Great, translated most of the famous Latin chronicles in English. He is known as the father of English prose because he is the first one who translated Latin work into English prose form. That's why he's called the father of English prose. He became the king of Wessex in 871 AD. The successive raids of the Danes made the English miserable. The Danes burned the books, destroyed like the mental peace of the peoples they used to believe over there. He translates the five great works. Like now we are going to talk about some great works which he translated Latin into English. So the first one is he translated pastoral care and ecclesiastical history of England, history of the world, deconsolation of philosophic and soliloquies. ये सबसे पहले हमने इसके एक किंग के बारे में बात की है जो किंग एल्फ्रेड था. किंग एल्फ्रेड ने जो लैटिन में थी जो बुक्स थी जो प्रोज फॉर्म में लिखी गई थी उसको सबसे पहले उसने इंग्लिश में कन्वर्ट किया, इसलिए उसको प्रोज का जो फादर बोला जाता है. उसके बाद सबसे ज़्यादा जो उसने 5 उसके जो सबसे बड़े काम थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया है. इधर मैंने आपको इन शॉर्ट आपको बताया है कि कौन कौन से उसने 5 जो हैं उनको लैटिन में से उसको इंग्लिश में उसने कन्वर्ट किया था. वो ये 5 उसकी ये ग्रेट वर्क्स हैं जो हम इधर देख चुके हैं. अब बात करेंगे सेकंड फेमस राइटर ऑफ प्रोज. फर्स्ट फेमस राइटर ऑफ द प्रोज तो हो गया ना, एल्फ्रेड हो गया. अब सेकंड फेमस राइटर ऑफ प्रोज है Anglo-Saxon period was no doubt Alfric. The second famous writer of prose is Alfric. There it's Alfric. Truly the Anglo-Saxon prose works are of historical as well as in literary interest. ओके अब बात करेंगे एल्फ्री के बारे में. मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि हाउएवर जो सेकंड फेमस प्रोज राइटर ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड वाज नो डाउट ही वाज एक्चुअली अ प्रीस्ट. अब मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी हु वाज एल्फ्रिक एक्चुअली. Among his famous writings were Lives of the Saints, homilies, and grammar. Moreover, compared to the other contemporary prose writing of the period, Alfred's prose was easy and alliterative. A solid foundation for Old English prose was found by Alfred, and Alfred added to its perfection and force. Alfred was an author of age who had increased entire bulk of Old English prose literature. The amount of surviving Old English prose is much greater than the amount of poetry. Truly, the Anglo-Saxon prose works are of historical as well as literary interest, as they provide excellent records of founding and early development of the Church, England, and also they reflect the introduction and early influence of the Latin European. के जो फर्स्ट था हमारे पास एल्फ्रेड.
सेकंड है हमारे पास एल्फ्रिक, इसने क्या किया था प्रोज पीरियड में, लाइक इसने कौन कौन से काम किए और उसके बारे में हमने डिस्कस किया है कि एज़ कम्पेयर टू द अदर प्रोज राइटर ऑफ द उस दौर में जो और प्रोज राइटर थे उनके निस्बत इन एल्फ्रिक को और एल्फ्रेड को लाइक इतनी उनको क्यों शोहरत मिली। द वजह ये थी कि इनका जो राइटिंग का स्टाइल था वो इजी था और एलिटरेटिव था। लाइक द मेन थिंग यू हैव टू बी रिमेम्बराइज्ड इज टू बी लाइक their writing style was easy and alliterative as like we have discussed before. So अब उसने जो अब हम एल्फ्रिक की बात कर लेते हैं, उसकी जो बुक्स के बारे में बात कर लेंगे वो है द पोएम ब्यूवल्फ, रिटन इन अराउंड लाइक 700 to 800 AD, और दी सी फेरर थी उसने 900 AD में लिखी थी। अब बात करेंगे लिटरेरी सिग्निफिकेंस ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड। The Anglo-Saxon Chronicle has also proven significant for historical study, preserving a chronology of early English history. Some of the most important works from this period include the poem Beowulf, which has achieved national epic status in British. अब ये सेक्सन पीरियड के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लाइक एंग्लो सैक्सन लिटरेचर, कल्चर एंड लैंग्वेज आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये जो एंग्लो सैक्सन लिटरेचर है और कल्चर है और जो लैंग्वेजेस हैं ये हमारे इंग्लिश लिटरेचर का लाइक एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और एंग्लो सैक्सन हेरिटेज इज़ अ रिक्वायर्ड कोर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर डिपार्टमेंट, और इसको मस्ट होना चाहिए लाइक एज वी आर स्टडीड इन आवर BSc इंग्लिश लिटरेचर। तो ये हमें पढ़ाया जा रहा है वेस्ट सैक्सन प्रोज पीरियड एंड पोएट्री पीरियड एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ। It is quite necessary to learn about Anglo-Saxon culture since it is a civilization that created modern-day English literature and influenced later English culture. अब बात करेंगे कि great और hidden life of Anglo-Saxon find expression in all their literature. The Anglo-Saxon Chronicle has also proven significant for historical study, preserving a chronology of early English history. In addition to Old English literature, Anglo-Latin works comprise the largest volume of literature from the early Middle Ages in England. अब मेन फीचर्स की बात करेंगे, वो है लव फॉर पर्सनल फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबल टू नेचर, रिलीजन, रिवरेंस ऑफ वुमेनहुड एंड स्ट्रगल फॉर ग्लोरी। अब है हमारे पास इम्पैक्ट जो थे वो ओल्ड इंग्लिश के वो थे कि दे रिप्लेस द रोमन स्टोन बिल्डिंग्स विद देयर ओन वुडन वंस एंड स्पोक देयर ओन लैंग्वेज which gave rise to English spoken today. The Anglo-Saxons also brought to their own religious beliefs, but the arrival of Saint Augustine in 597 converted most of their country to Christianity. लाइक टू आज के हमने चैप्टर में पढ़ा है कि लिटरेरी सिग्निफिकेंस ऑफ एंग्लो सैक्सन प्रोज पीरियड के बारे में बात किया है। और फर्स्ट फेमस राइटर ऑफ एंग्लो सैक्सन प्रोज पीरियड एज ऑल ऑफ यू आर लाइक होप सो कि अभी तक आपको पता चल गया होगा वो एल्फ्रेड था और सेकंड वो एल्फ्रिक था। हमने इन दोनों राइटर्स की जो फेमस उनके ग्रेट वर्क्स थे उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया और लिटरेरी सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा, मेन फीचर्स ऑफ एंग्लो सैक्सन लिटरेचर के बारे में हमने पढ़ा है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि वेस्ट सैक्सन पोएट्री पीरियड के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। उसके बाद होप्स हो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।